Hello and a very good morning to all our viewers. You're watching the morning news show on CNN News 18 with me, Sakshi Singh Litoria, here on CNN News 18. And for the next 30 minutes, we'll bring you all the latest news and headlines from the nation and across the globe. And well, we begin this segment with the landmark decision made by the Supreme Court yesterday over Article 370. The Apex Court on Monday delivered its verdict validating abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. Hours after the verdict, Union Home Minister Amit Shah slammed Article 370 backers in the parliament. He said that some families in the valley benefited from Article 370. He further went on to say that many communities in Jammu and Kashmir were kept marginalized, and now Kashmiri Pandits, Gujars, Bakarwals and in fact refugees from Pakistan will get their equal rights. Home Minister also reiterated his attack on Pandit Nehru and his Kashmir policies. Shah said, and I quote, that in 1947 we were winning, but Nehru took the Kashmir matter to the United Nations. Meanwhile, the bills on Jammu and Kashmir were passed in the Rajya Sabha yesterday. जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर, ये तीन परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था उसको? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। मान्यवर आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो। इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है। इस बात को सुना। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं? वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है, जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है। नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह ये भी कहना चाहता हूँ कि मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। हमारी कोशिशें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी। Sir, today feeling a little disappointed because you raised the voice in the parliament as well on that day. Well, I'm very sad.
And I was actually much more sad and disappointed when this bill was introduced in Rajya Sabha in August 2019. But there was a hope against hope that a day there's another institution where we can approach, that is Supreme Court. Because these are two strong pillars besides the executive, that is Parliament and the Supreme Court. So Parliament went against us. Now our entire hope was on the judgment of the Supreme Court. I was very hopeful that Supreme Court will consider the historical background and geographical conditions of the state of Jammu Kashmir. Well, CNN News 18's Zaka Jacob spoke exclusively to Dr. Karan Singh, son of last Maharaja of Jammu and Kashmir, on the Supreme Court verdict and its impact on different sections of the people in the valley. Listen into that conversation. How do you see today's verdict? Do you feel that this will finally put an end to the controversy surrounding the integration of Jammu and Kashmir to mainland India, the accession of Jammu and Kashmir to mainland India? The court has said categorically that after the IOA was signed, there's no question arising of any residual sovereignty of Jammu and Kashmir. Well, you've asked two or three questions together. I have welcomed the judgment because it has ended an uncertainty that was hanging over the whole thing. It will probably end controversies to a large extent, but no controversies are ever sort of finished forever because there are always people who will try and raise it. But as far as the question of the state's relationship with the centre, that I think has now been firmly fixed. What will you say to those people who are still adamant, who are not ready to accept the judgment today? We can have political debates galore in this country, but ultimately, you know, the Supreme Court is the highest court of the land, and when it opines and when it puts out an order, unanimous order of all 5 judges, do you think a line should be drawn? For example, mainstream politicians in the valley and across party lines, Mehbooba Mufti, Omar Abdullah, Ghulam Nabi Azad, who was with the Congress, not with the Congress anymore, they are refusing to accept the verdict, saying it's unfortunate and that the people of Jammu and Kashmir have been cheated, but they have to accept. It's almost like, you know, this albatross around the neck that they have to accept. What would you say to that? Well, Ghulam Nabi has his own thing to say, but let me see, and again let me stress that I am speaking in my personal capacity, not on behalf of the Congress, that I know there will be a section of people in the state, a section of people who may not be happy, but my advice to them is, very sincere advice is, that there is no point now not accepting reality. Okay. For all constitutional purposes, the matter is now closed. So I would urge them to turn their energies towards the elections rather than towards an agitation regarding the relations.